Hello everyone, I'm Bharti Budhiraja. Today we will take up lesson 8 Reach for the Top part 2. In part 1 we have talked about a famous mountaineering personality, Santosh Yadav, who was the only woman in the world who has climbed the Mount Everest twice, and we are proud to be she's a proud Indian, and we have studied that how her struggles of life, how she belonged to a family which was very, very orthodox, but yes, they were modern in certain thinkings, and they allowed her for education, and how she was never ever satisfied with what she has got, and she was totally opposite to her name Santosh, and she achieved the pinnacle, or she achieved the top of her career, and she has become the only woman of the world who has climbed the Mount Everest twice. So this particular part talks about Maria Sharapova, a famous tennis player. Like Santosh Yadav also, she has had odds and things in her life, the struggles in her life, what are the problems she faces, कैसे वो उन problems को overcome करती है, what kind of a family she belongs to. We will be comparing both the Santosh Yadav and Maria Sharapova after the end of the reading of part 2. So this is what the story is about. This is about Maria Sharapova. So let's do with the beginning. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of the women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. Before we move on, there is a small activity which will be helpful to us. These are word meanings which have to be matched with the second column, and let's quickly do this. Something disarming का meaning होता है something which is likable, causing so this is this one, something that makes you feel friendly. This is the A part, taking away your sub. Alright, next, at odds with होता है something which is in contrast to or not agreeing. इसको हम A बना लेते हैं, ये B, C, D, E, F, G and H. Okay, so we'll match quickly. Glamorous attire होता है attractive and exciting clothes. Okay, in almost no time means quickly, almost, immediately. तो ये D part हो गया. See, this is going to help you. जब आप चैप्टर में ये phrases, ये चैप्टर में पार्ट्स आएंगे तो आपको ऑलरेडी इनका मीनिंग पता होगा. Poised beyond her years. Poised beyond more than years means that she was more calm, confident and in control than people of her age. ये हमारा E part है. Packed off means sent off. F. Launched is started, and heart wrenching is causing strong feelings of sadness. ये हमारा H part है. ठीक है, so this is what the meaning was. Something disarming means something that makes you feel friendly, taking away your suspiciousness. At odds with is in contrast to, not agreeing with. Glamorous attire means attractive and exciting clothes. Then poised beyond in almost no time means quickly, almost, immediately. Poised beyond her years means more calm, confident and in control than people of her age usually are. Packed off is sent off, launched is started, heart wrenching is something which is causing strong feelings of sadness. So as we were going to read these words, we have to remember. एक बार हम वापस आके भी देख सकते हैं अगर हमारे पास ये point आता है, नहीं तो आप याद रखना, we'll be able to help. Now when you as you read, look for the answers of the following questions. Why was Maria sent to United States? Why didn't her mother go with her? What are her hobbies? What does she like? And what motivates her to keep going? तो ये 4 questions हैं जो हम पढ़ने से पहले माइंड में रख लेते हैं, so that when we read, we are able to understand what the answers to these questions are. Alright? There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. देखो वो 3-4 जो हमने किए थे उनमें से 2-3 तो आ ही गए हैं. Something disarming, something likable, something which is very impressive,
समथिंग एट ऑड्स विद हर, कॉन्ट्रोडिक्टरी टू हर स्माइल, कुछ ऐसा लगता है, और जो उसके ग्लैमरस ड्रेस में होता है ऐसा लगता है कि जितनी वो रिच और जितनी वो स्मार्ट और ग्लैमरस दिख रही है, देयर इज समथिंग बिहाइंड हर, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड हर लुक्स, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd August 2005 to the world #1 position in the world women's tennis. So, and that something in her is, उसके अंदर क्या थी वो quality, that on Monday 22nd August 2005 to the world #1 position in the women's tennis. So she has become a #1 in the women's tennis. We, I think आप लोगों को पता होंगे बहुत सारे मैचेस होते हैं, विम्बल्डन, वी हैव द फ्रेंच ओपन, वी हैव द US ओपन, ये सारे जो होते हैं इनमें से जो बेस्ट निकलता है दैट पर्सन इज नेम्ड एज द #1 in the tennis, male and female depending on the gender. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो उसने 4 years में अपनी ट्रेनिंग की. इफ़ यू रिमेंबर संतोष यादव की भी 4 years का वो माउंटेनियरिंग था when she got the chance to climb the Mount Everest. So all this happened in almost no time. Almost no time means बिल्कुल भी time मतलब there is no it didn't take a long period of time but in a very short time. Poised beyond her years, she was as she has achieved what the people at her age never be able to achieve, or which they achieve not at her age but at a bigger age. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, टॉप. तो उसको 4 years of professional ट्रेनिंग के लगे to reach the top. It was not that it was from the childhood और वो जाके 15-16 years बाद उसको सक्सेस मिला. No, she worked so hard that within 4 years she was able to achieve. Let's look at the picture of Maria Sharapova, won the women's single at Wimbledon in 2004. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. मगर ये जो success है, when she became a professional, see what we are talking about 4 years is when she became a professional tennis player, उसके 4 years में she was able to achieve what she achieved. लेकिन before she became a professional tennis player, there is a struggle which they are talking about. However, the rapid ascent, ascent होता है increase, the rapid होता है fast. तो ये जो fast increase हुआ है उसका in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice. लेकिन उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो गई थी before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. And it was not that she had to work hard from childhood, लेकिन कुछ sacrifices भी उसने लाइफ में दिए थे. वो क्या हैं अभी हम पढ़ेंगे. And where would be very few children would be prepared to endure means endure होता है tolerate या take up, ठीक है. तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेने के लिए राज़ी होंगे. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in United States. Packed off हमने क्या किया था, sent off. She was only 10 years old जब उसने ये अपना 10th birthday celebrate किया था, and then she was sent on a train to United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her. Launched means started her on the path of success and stardom. वो जो जर्नी थी उससे वो स्टार्ट हुए थे. वो अगर नहीं जाती तो शी वुड नॉट हैव बिकम अ ग्रेट टेनिस प्लेयर. हर पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year separation from her mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of a visa restriction. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a प्राइज. तो क्या थी वो प्रॉब्लम, हार्ट रेंचिंग क्यों थी. हार्ट रेंचिंग विच कॉजेज सैडनेस. सैडनेस वाली क्यों थी वो, वाई, बिकॉज इट वॉज अ 2-year सेपरेशन फ्रॉम मदर येलेना. उसके जो फादर थे, फादर यूरी, वो तो साथ गए थे, बट बिकॉज ऑफ सम वीज़ा रिस्ट्रिक्शन मदर कुड नॉट बी विद हर फॉर
2 years, और इमेजिन करो 10-year-old बच्चा है, उसके साथ 2 साल तक मदर नहीं रहेगी, फादर ही होंगे सिर्फ. So mother is something, if mother expires that's a different thing, but if mother is there and the child is not there with the mother, it is little difficult for the child. The later was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. उसने ये चीज़ अपने बचपन में ही सीख ली थी कि अगर हमें सक्सेस चाहिए, they could have waited for 2 years, लेकिन फिर उसका करियर बहुत आगे हो जाता है, she would have become old. तो इसलिए अगर चाहिए हमें दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, मीन्स लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ चीज़ें पे करनी पड़ेंगी, ओनली देन यू विल रीच द टॉप. आई यूज टू बी लोनली, सो लोनली, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब मदर है नहीं वहाँ पे उसके पास, फादर को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ही हैज़ टू पे फॉर द फीस, ही हैज़ टू पे फॉर द ट्रेनिंग, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता था उन दिनों में भी, अभी भी. सो ही हैड टू वर्क वेरी मच. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. तो ये मदर और फादर दोनों के सैक्रिफाइस है, उन दोनों का हार्ड वर्क है. मदर हैज़ स्टेड बैक टू से दैट ओके फाइन, एटलीस्ट यू दो बोथ गो, डोंट स्पॉइल योर करियर. एंड फादर हैज़ गॉन टू अ न्यू कंट्री, स्टार्टेड ऑफ अ वर्क, एंड ही इज़ अर्निंग मनी टू पे फॉर हर ट्रेनिंग. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils, अब ये किसी hostel में रह रही है, she is not staying with the father also, so she is being put in a hostel because the mother is not there to take care, father has to go to work, तो बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? She has been put in the hostel of the tennis players. The other tennis pupils would come in at 11 p.m, wake me up and order me to tidy up the room and clean it. तो जो उसके सीनियर्स थे, अ काइंड ऑफ रैगिंग वुड हैपन. वो छोटी थी एज में सबसे, तो शी वुड स्लीप एट 8 o'clock, लेकिन उसके सीनियर्स 11 o'clock आफ्टर पार्टिंग, आफ्टर enjoying themselves would come, and then they would wake her up and make her tidy up and clean the room like a servant. Instead of letting that depress me, लेकिन जो ये चीज़ हो रही थी उसके साथ सीनियर्स की, that thing जो थी, that was that the seniors used to insult her, make fun of her, that thing did not depress her. I became more quietly determined and mentally tough. In fact, इस चीज़ को उसने पॉजिटिवली लिया और इन चीज़ों से वो मेंटली टफ बन गई, उसको किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होने लगा. I learned how to take care of myself. She also learned how to take care of herself, how to fight her fights. I never thought of quitting because I knew what I wanted. उसने कभी नहीं सोचा या परेशान हो गया कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ, आई विल नॉट डू दिस वर्क, बिकॉज उसको पता था कि उसको क्या चाहिए. व्हाट वाज हर अल्टीमेट और फाइनल डेस्टिनेशन? रीच द बेस्ट टॉप और बिकम द बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ टेनिस. when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. When you come from nothing means she is not from a background which has a lot of money and fame and everything. ये नहीं है कि किसी फेमस टेनिस प्लेयर की डॉटर है वो. She has nothing, and when you come from nothing and have nothing, she is not very very rich, so she doesn't have anything to lose. कोई fame नहीं, कोई कुछ नहीं. Then it makes you very hungry and determined. लेकिन आप बहुत rich बनना चाहते हो, आप बहुत famous, आप बहुत ज़्यादा fame चाहते हो. I would have put up with such much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. अगर ये इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन मुझे टीच कर रही है एक लेसन, तो शी सेज आई एम इवन रेडी टू टेक मच मोर, और ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और ज़्यादा इंसल्ट लेने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में अपनी करियर के लिए कुछ सिखा रही हैं. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. तो आज भी अगर उसको कोई बोल दे, कुछ कह दे, तो शी इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इट. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. तो ये उसकी achievements हैं. She has won the crown at the Wimbledon in 2004, and not only that, she has been named as the topmost world #1 of the women tennis player. While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiment. तो ये उसके लिए she is an inspiration. She is an inspiration for youngsters.
कि अगर वो कर सकती है, शी इज़ बॉर्न इन अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज, शी इज़ नॉट वेरी वेरी रिच बट स्टिल शी इज़ बीन एबल टू अचीव दिस। तो इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उसकी जो लाइफ की स्टोरी है, दैट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, जो दूसरों की लाइफ को टच करके उनको भी बहुत कुछ सिखाती है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. कौन से sacrifices? Sacrifices of her mother not being there, father being busy, she being put in the hostel, insult, humiliation. जो भी उसने लाइफ में struggles और sacrifices किए, they were worth it because now they are giving them the pay. I am very competitive. I work hard at what I do. मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ एट वॉट आई डू. इट्स माई जॉब. दिस इज़ द मंत्रा ऑफ हर सक्सेस. तो जैसे हमने उसका मोटो था संतोष यादव का कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई, द पीपल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू माई थाट्स. सेम वे इसका मंत्रा या फिर मोटो इज़ दैट आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. जो मैं काम करती हूँ मैं उसमें बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मैं बेस्ट एफर्ट पुट करती हूँ. इट्स माई जॉब. अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं हमको अपना बेस्ट देना है. आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव. तो इसलिए दैट इज़ वाई व्हेन शी इज़ प्लेइंग अ मैच शी डजंट वांट टू कम सेकंड, शी वांट्स टू कम फर्स्ट, द बेस्ट. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. She was in America, US. She plays from US as a player of US. लेकिन initially she was born in Russia, so she has a Russian this thing also nationality. So still she has a proudly parades the Russian nationality. उसको फिर भी लगता है कि मैं रशियन हूँ. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me to. अगर वो चाहते हैं कि मैं खेलूँ उनके लिए तो I am ready to play with Russia also, for Russia also as a Russian tennis player. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. तो शी इज़ अ सी टेनिस और जिमनास्टिक्स ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो बहुत यंग एज में खेलने पड़ते हैं. 16, 17, बाय द टाइम यू रीच 20, 25, 30 यू आर रिटायरिंग. ऑलराइट, बिकॉज वो फिर एनर्जी खत्म हो जाती है. यंग पीपल हैव मोर एनर्जी. तो इसलिए लाइक अ टीनेज नंबर ऑफ अदर टीनेज पीपल, हर हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल and fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with the love of pancakes with chocolate spread and frizzy orange drinks. तो एक टाइप से वो ग्लैमरस भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है, और दूसरे पॉइंट पे like a normal teenager, like a normal child, she loves eating chocolate, she loves eating pancakes, she loves drinking aerated drinks and cokes and everything. So therefore she has all the qualities of a teenager. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Pigeonholed होता है एक typical category में होना कि she is only a struggler. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. तो जो उसकी readiness है और sacrifice है उन सब ने उसको world के top number 1 पे भेज दिया है. Few would grudge her. Grudge होता है jealousy, jealous होना. Few would grudge her the riches she is now reaping. That is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. तो जो उसकी monetary gains है, जितना वो कमा रही है पैसा, reaping. Now she is reaping. Reaping होता है harvesting of crops. तो जब क्रॉप्स बड़ी हो जाती हैं, जब उनको काटते हैं, वो हार्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रीपिंग. तो जैसे क्रॉप्स काट के हमें पैसा मिलता है वैसे ही शी इज़ काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग मनी बिकॉज ऑफ हर करियर. दैट इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स. मतलब जो पैसा कमा रही है उसके बारे में वो क्या कहती है? मनी इज़ अ मोटिवेशन. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली, वेरी वेरी पुअर फैमिली, हु हैड टू, हर फादर हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट हर दिस थिंग ट्रेनिंग. तो मनी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन होगा कि आई हैव टू अर्न मनी एंड हेल्प माई पेरेंट्स. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो मनी तो इम्पॉर्टेंट था, बट टेनिस जो स्पोर्ट है उसमें नंबर 1 बनना जो था वो दैट वॉज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग.
वो मनी तो अर्न कर रही थी, मे बी शी वन फ्यू awards या few matches when she won, she would be earning money, but her main aim was to reach the top, and reaching the aim of reaching the top was something which kept her going. जो ड्रीम था उसका कि मैं बड़ी होके या मैं बेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बनूँ, बेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बनूँ, दिस ड्रीम kept me going, मतलब kept me going, kept me making work. So this is what we have to read about Maria Sharapova. I hope you've understood that how she had to struggle, how she had to sacrifice so much, tolerate so much of insults and humiliation at a hostile level, but all these problems did not stop her, did not demotivate her, discourage her, rather they encouraged and motivated her, and she achieved in life what she had to achieve. In सारी problems से she was able to overcome, she was able to become mentally tough, and that is the reason of her becoming the top of the tennis player, and she is called as the #1 woman of the tennis world. Okay, so let's quickly see the important points of this chapter. Biographical sketch, again this is a biographical sketch, वो भी biographical sketch था, which describes the world renowned tennis star Maria Sharapova, how she rose to the top and the world of tennis. So she was named as the best woman or the top #1 woman of the women tennis player. It unravels the secret behind her phenomenal success. उसकी जो सक्सेस हुई है उसके पीछे क्या रीजन्स थे, और रीज़न क्या थे? रिगरस लेबर एंड इमेंस सैक्रिफाइस. रिगरस लेबर होता है वेरी वेरी हार्ड, ओके, लेबर होता है हार्ड वर्क. तो कैसे उसने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया, एंड दैट ऑल्सो रिगरसली, बहुत ज़्यादा. एंड इमेंस इज ग्रेट, ग्रेट सैक्रिफाइसेस लाइफ में क्या किए, मदर से अलग रही, फादर से अलग रही. शी हैड टू सैक्रिफाइस हर चाइल्डहुड, शी हैड टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेनिंग ऑन हर एंड हर पेरेंट्स पार्ट. दोनों ने, पेरेंट्स ने भी और उसने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में, and that is why she has achieved what she has achieved today. Author reveals that one has to pay a price for reaching the top in the form of hard work, labor, rigorous training and sacrifice. ये हम बात कर चुके हैं that she had to pay a price for it, और वो price क्या था? Hard labor, rigorous training और sacrifice. Paying a price of living away from parents was one thing which she had to give. Diligence, hard work and dedication never go unrewarded. ये हमारे लिए मैसेज है. दिस इज़ द मैसेज फॉर रीडर्स कि जो हमारा हार्ड वर्क होता है, डेडिकेशन होती है, diligence is also hard work and working through our concentration, they never go unrewarded. अगर हम इन सब चीज़ों के साथ काम करेंगे, we will surely win. Dreams can be realized only if one works earnestly, putting one's heart and soul in translating them into reality. अब ये reality क्या है, dream क्या है, let's see. कई बार क्या होता है, we have very very great dreams, बहुत high dreams होते हैं कि हमको ये dreams fulfill करने हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी काम नहीं करते, हम अपना heart and soul नहीं डालते, हम अपना hard work नहीं डालते, we just keep sitting and waiting कि हो जाएगा. But this is what we have to realize, to make our dream as a reality, हमें हार्ड वर्क करना है, हमें रिगरस ट्रेनिंग करनी है, सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े तो वो करने हैं. नथिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट दोज हु स्टिक टू देयर पाथ. ऑब्स्ट्रक्ट होता है स्टॉप. हु स्टिक टू देयर पाथ विद एन अनस्टैगरिंग डिवोशन. अगर कोई ऐसा बंदा है जो अनस्टैगरिंग मीन्स नॉट चेंजिंग, वो डिवोशन, वर्किंग इन अ डिवोशन मीन्स डिवोटेड वे, जहाँ आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड विदाउट लेटिंग द प्रॉब्लम्स कम ओवर यू. तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, दैट पर्सन विल बी एबल टू अचीव वट एवर ही और शी वॉन्ट्स, एंड दिस इज द मैसेज विच Maria Sharapova gives us to us. So we are through with the reading. We'll take up the question answers of part 1 and part 2 together in the next lecture. Thank you.